Now there is something called automate. So what is the automated task जो है? So how exactly you can go about automating a task? ये थोड़ा सा you can just check. Can you put an automate task onto this? This I'm not very clear. Right? So this power automate is I think built in. Now what I do is I insert a pivot table here. And I insert on a new sheet. Okay. And then what I do is I put in a document date, a document number. Now I do it here. I right click on this. So I'm not getting the option of formatting this pivot table. Just 1 second. But how do I change this? Instead of count, then I want to change it to sum. Okay. I get this. Okay. Now what I want to check is that by default, how can I get year and the month? So I go down to pivot table here. Correct? So I'm not getting the options for getting year and the month here. That is the issue. Just 1 second. Pivot table settings. Pivot table fields are there, Excel Online. Insert pivot table. These are the fields. Right. I'm just checking what is there in Office 365. अब इसका automatically year or month नहीं आता है. Are you getting from where I'm coming? Yes, sir. Also, I cannot change it to the. सर pivot के साथ हम लोग कस्टम कॉलम भी ऐड कर सकते हैं सर. वो मैंने कल दिखाया था. सर. हाँ, वो मैंने कल दिखाया था ना तुम्हें. कस्टम कॉलम मैंने कल के दिखाया था. But what I'm saying is Office 365 के online version में do you have that option? So I can't change it the way I was doing it here. For example, on the desktop version, ये जो पिवट का लेआउट था जो मैंने चेंज किया था, ये वाले ऑप्शंस नहीं है. पिवट टेबल ऑप्शंस नहीं है. ये वाले मुझे नहीं मिल रहे. आई एम नॉट गेटिंग देम. What is this buttons? Buttons is के बॉस ये ड्रिल डाउन होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट?
In the online version, you only have the slicer. इसमें ज़रा देखना पड़ेगा बेटा कि कुछ और तो मैं मिस नहीं कर रहा. यू कैन डू अ ग्रुप और अन अनग्रुप. तो ये मैंने किया. मैंने इसको सपोज आई वांट टू डू अ ग्रुप रोज. तो पिवट टेबल एनालाइजर नहीं है इसमें. पर इसमें ऑटोमेट है. पावर BI, दिस ऑटोमेट इज देयर. So what all can an automation do? Suppose record actions. Copy positive name 1, paste, and I stop. अच्छा, तो स्क्रिप्ट्स कैन रन. अब ज़रा अपने उसमें प्रोजेक्ट में देखना उसमें ऑटोमेट है कि नहीं है. सो यू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट इट मीन्स. सो यू कैन ऑटोमेटिकली सेंड एन ईमेल फ्रॉम द क्लाउड अगर उसके पास वो है. आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग. यस सर. तो वो एक एक का वो अप्रूवल लेगा और वो ये क्या हुआ. Create a flow. You can create a flow. So based on business conditions, you can send an email. But I have to just check out how it does. पर इसमें pivot table का वो नहीं है दोस्त. Automate a task, help, new script, and this thing. So in this Excel options and the Office 365 on the cloud, we are not getting.
this data, I don't have many options here with Excel. ये एक इशू आएगा. शो डिटेल्स. अच्छा, डिटेल्स इसमें से ड्रिल डाउन आ रहा है. सो ड्रिल डाउन इज कमिंग फाइन. ओके, analyzer, find and select, move pivot table as copy. You can insert a slicer, and within the settings, what are there? For error value, show 0. For empty cells, show 0. Refresh the file when you open. This is basic. But this layout is not there, which is pivot table options. And if I go down to display the classic pivot table layout, that option is not there on the cloud, or I'm not able to catch it कि इसमें राइट क्लिक नहीं काम कर रहा. तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें सेल्स ऑर्डर पेंडिंग वगैरह कैसे निकाल सकते हो पिवट से? अब्दुल तुम्हें समझ आया कि सेल्स ऑर्डर पेंडिंग कैसे निकाल सकते हो? अब्दुल, ये लोग कहाँ हैं सब? मैं हूं सर.